today's topic beta. With today's topic, your flow through pipes laminar flow will be over, and after that we will be having three chapters to discuss. We will be having turbulent flow, we'll be having boundary layer theory, and we will be having the dimensional analysis. तो ये तीनों chapter discuss करने वाले हैं, and definitely I will be discussing basics of what compressible fluid flow also. आप लोगों के लिए ये चैप्टर भी मैं लेकर आने वाला हूं. चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा आज का डिस्कशन. लेट अस एवरीथिंग इज फाइन. चलिए let us start discussing how the HGL and TL will look like for sudden expansion. तो बेटा देखो sudden expansion क्या होता था. I hope everyone is aware of sudden expansion. बेटा what is the meaning of sudden expansion? Anyone in the class can tell me what is sudden expansion? बोलो रे बाबा. What is sudden expansion? Anyone in the class बोलिए. What is sudden expansion? Let us suppose I am having one small diameter pipe, and let us suppose it is connected to larger diameter pipe. Then I will be having the sudden expansion. Now listen carefully. For drawing HGL and TL, HGL और TL को ड्रॉ करने के लिए मैं assume कर रहा हूं that streamlines are getting expanded in this way, means flow is getting expanded in this way. केवल HGL और TL को ड्रॉ करने के लिए मैं कुछ ऐसा मान रहा हूं. देखिए बेटा, let me say this is the central streamline, and let me say the flow is getting suddenly expanded in this way. ऐसा होता नहीं एक्चुअल में, I have told you earlier also, but let me assume it is happening in this way. मान लीजिए कुछ ऐसा हो रहा है ताकि आप लोग अच्छे से डायग्राम को समझ सकें. दिस इज assumption बेटा. Generally it doesn't happen in this way. Now look at here. I want to draw the HGL and TL for sudden expansion. तो देखो बेटा ध्यान से, please observe carefully. Let me say this is cross section 1. बेटा let us suppose this is cross section 1. इस पर मैं कोई point 1 ले लूंगा. Let us suppose this is cross section 1. Please observe carefully my friends. Please observe carefully. Let me say this is point 1. Let me say this is point 1, and let me say बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल पास में बेटा, यहाँ पर just before sudden expansion. Let me say here at the last stage of the smaller diameter pipe. यहाँ कहीं पर बेटा, यहाँ कहीं पर. Let us suppose here I am having point 2. ध्यान से देखना बेटा. Please observe carefully. Let me say यहाँ हो just at the starting of bigger diameter pipe. Let me say I am having third cross section, and let me say here I will be taking point number 3. बेटा I am continuing yesterday's class only. जो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था उसी को कंटिन्यू कर रहा हूं. झमाझम डिस्कशन वी विल बी हैविंग, सो प्लीज ऑब्जर्व केयरफुली. बट रिमेंबर I have assumed that the sudden expansion is very simplified. मतलब ऐसा होता नहीं है, बट मैंने assume किया कि suddenly it is getting expanded, flow is suddenly getting expanded. Let me say we are having sudden expansion in this way. चलो अब ध्यान से देखना बेटा. पहले क्या ड्रॉ करेंगे? Let us try to draw HGL first. So देखो बेटा ध्यान से देखना. पहले ये 4 क्रॉस सेक्शन बना देता हूं आपको जो मैंने लिए. Let us suppose whatever the 4 cross sections I have taken, let me try to draw for you people so that you can understand clearly बेटा, ताकि आपको पता चल जाए कि सडन एक्सपेंशन के लिए HGL और TL कैसा दिखाई देगा. What a beauty, beautiful, excellent. Yes. आप लोग देख पा रहे हैं बेटा? Are you able to see all the 4 cross sections? बेटा? Are you able to see all the 4 cross sections? Confirm me बेटा. Confirm me. Okay सुशांत, no problem बेटा. I will upload. कर दूंगा. Extremely simplified. Super picture. Yes, smaller diameter to larger diameter pipe. Excellent बेटा. यहां तक are you clear till here? Excellent. अब ध्यान से सुन लेना बेटा.
I'm trying to draw HGL. You can observe 100% there is nothing happening to the potential head. मैंने चारों points 1 2 3 4 I have taken at the same streamline, so no problem. But can you tell me, when I'm moving from 1 to 2, anyone in the class can tell me what is happening, to the pressure? बोलिए बेटा, when I'm moving from 1 to 2, what is happening to the pressure? Anyone in the class? बोलिए, when I'm moving from 1 to 2, what will happen to the pressure? P1, P2. Let me say at 1 the pressure is P1, at 2 pressure is P2. Anyone in the class? What can I say? P2 will be more than P1 or P2 will be less than P1? Chapa Ramesh, I will not use any other color in place of yellow, beta. I know where I am using yellow. I don't want these cross section to be too much visible because they don't have any use. So I know which color combination I need to use, beta. Ramesh, if you are not able to see, that is the purpose of this yellow color. Why I'm drawing these cross sections with yellow color? Because they are of no use. You need not to focus on them. That's why I'm drawing, so that you will be able to focus on the important things. Try to understand. Ha, sir, don't use yellow color. I know yellow color is not visible, beta, but still I'm using because I don't want you to focus on that cross section. Are you getting what I'm saying? Chapa. Ha. Now look at here, beta. Look at here. Are you able to understand, my friends? When I'm moving from 1 to 2, I hope you are able to understand. Something like this will happen, beta. I hope you are able to understand. Something like this will happen. Anyone in the class? Yes. What a idea. Beta, I am doing everything. Remember, whatever I am teaching for the students. For the student point of view, I am teaching. I never think from faculty point of view. I always think from students point of view कि आपको क्या चीज दिखना है, क्या चीज नहीं दिखना है. What a beauty. Yes. Now listen carefully, my friends. Now when I'm moving from 2 to 3, any intelligent student of the class can tell me what will happen, beta. Can you tell me, when I'm moving 2 to 3, what will happen to the pressure? अरे देखो, when I'm talking about HGL, आपको पता है ना HGL पर क्या represent करते हैं? What HGL represents? HGL represents the piezometric head at different points in the fluid flow. HGL represents the piezometric head at different points in the fluid flow. So potential head is same. So basically my analysis for the pressure head only, कि pressure head का क्या हो रहा है. So when I'm moving from 1 to 2, 100% pressure head is decreasing because of viscous losses. But now my question is, when I'm moving 2 to 3, what will happen to the pressure head? Yes. अरे वाह मनीष, वाह, जियो रे बाबा मनीष, excellent बेटा. प्रेम सागर, beautiful, excellent. I am very happy. You are absolutely correct. When I'm moving from 2 to 3, 100% pressure will increase. और अगर प्रेशर इंक्रीज करेगा तो 100% द प्रेशर लाइन विल राइज. ऐसे HGL will rise बेटा. HGL will rise like this. And then when I'm moving 3 to 4, when I'm moving from 3 to 4, what will happen to the pressure? Again the pressure will decrease, beta. Because of the head loss. I hope everyone is clear till here, beta. अब ध्यान से सुनना बेटा, whatever is happening between 2 to 3, I am representing by sudden change. वैसे ये sudden नहीं होता है. Between 2 to 3 it will increase gradually, but I am trying to represent suddenly. It will not have suddenly, beta. From 2 to 3 it will not increase suddenly, but okay, just for the representation purpose I am showing you the sudden increase in the pressure. So look at here, 1 to 2, there is a decrease in pressure because of the head loss. 2 to 3, there is a sudden increase in pressure because of what? Why the pressure is increasing, beta? Why the pressure is increasing? Anyone in the class can tell me, beta? Anyone in the class can tell me why
here the HGL is rising. Why the pressure is rising? Anyone in the class? Anyone in the class बेटा? Anyone in the class? देखो ध्यान से, मैं आपको बताता हूं, please listen carefully. Let me say, my friends, here the pressure is P1, here the velocity is V1. Let me say at cross section 2 pressure is P2, velocity is V2. Let me say at cross section 3 pressure is P3, velocity is V3. Let me say at cross section 4 or at point 4 pressure is P4, average velocity is V4. I hope you are able to understand one thing, my friends. I hope you are able to understand. P1 is equal to, sorry, V1 is equal to V2, right? V1 is equal to V2. V1 is equal to V2. There is no doubt. Or you can say V2 is equal to V1. ऐसा अच्छा लगेगा. V2 is equal to V1. There is no doubt. And 100% P2 will be less than P1. इसमें भी कोई doubt नहीं because of the head loss. Now listen carefully. When I'm coming 2 to 3, there is a sudden expansion. The area is increasing, and if area is increasing, 100% velocity will decrease. So there is no doubt. V3 will be less than V2. V3 जो होगा बेटा V2 से कम होगा, and I can say P3 will be more than P2. And if you see the velocities, I can say V3 will be equal to V4, or we can say V4 will be equal to V3 beta. Can I say V4 will be equal to V3, and can I say P4 will be less than P3? ये बोलो बेटा, यहां तक आपको क्लियर है क्या? Are you clear with all these relations whatever I have written? Yes, are you clear with all these things whatever I have written बेटा? ये जितनी भी चीजें मैंने लिखी हैं बोर्ड पर, स्क्रीन पर, आपकी स्क्रीन पर, आर यू क्लियर विद दिस? द प्रेशर एट 2 विल बी लेस देन प्रेशर एट 1. कैन आई से V2 विल बी इक्वल टू V1? कैन आई से at point 3 where I am having more area, and at point 2 where I am having lesser area, so 100% V3 will be less than V2. And if V3 is less than V2 according to Bernoulli's equation, I can say approximately I will be getting, maximum times I will be getting, P3 is more than P2. And of course when I'm seeing 3 to 4, V4 will be equal to V3, but P4 will be less than P3 because of the head loss. Bolo re baba, are you clear till here? Now listen carefully. This is your HGL beta. Here I am having, देखो, I want to explain clearly each and everything. Here I am having the rise of HGL. Why I am having the rise of HGL? Because what is happening? Kinetic energy is converting into pressure energy. Because kinetic energy is converting into pressure energy. There is no doubt. आप लोग यहां तक क्लियर है बेटा? फाइन. Now listen carefully. How the TEL will look like? TL कैसा दिखाई देगा? Of course, I hope you are able to understand. TL will be like this. Total energy line will be like this beta. I hope you are able to understand. Any intelligent student of the class can tell me, bolo re baba, this is equal to what? My beautiful students, can you tell me this is equal to what? ये difference किसके equal होगा? Anyone in the class, this difference will be equal to what? This difference will be equal to what? Bolo re baba. This difference will be equal to what? Arey, the green one is a TL. The red one is HGL. So can you tell me this difference will be representing what? Velocity head. So I hope you are able to understand. This will be representing V square by 2Z, or V1 square by 2Z, or you can say V2 square by 2Z. ये बात आपको समझ में आती है क्या? Are you able to understand this, my friends? Are you able to understand this? Yes. अरे V1 is equal to V2 ना? अरे point 1 and point 2 both I have taken in smaller diameter pipe only, in smaller size pipe only. So V1 and V2 are same. So V1 square by 2Z or V2 square by 2Z. Are you getting what I'm saying? Now look at here. मुझे सिर्फ एक चीज बताना बेटा. When I'm going from 2 to 3,
when I'm going from 2 to 3, any intelligent student of the class can tell me what will happen to total energy. जब मैं 2 से 3 जा रहा हूं बेटा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनर्जी कन्वर्जन. हाँ, आई नो काइनेटिक एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू प्रेजेंट एनर्जी, दैट इज ओके, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट. मैं ये बोल रहा हूं व्हेन आई एम मूविंग फ्रॉम 2 to 3, व्हाट विल हैपन टू टोटल एनर्जी. What will happen to total energy? बोलो रे बाबा, बोलो रे बाबा. What will happen to total energy? Yes, 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 yes. Total energy decreases. Total energy decreases. Why? Why, beta? Why total energy decreases? Yes, you are absolutely correct. You are absolutely correct, beta. Total energy will decrease a little bit. मैं आपको पूछ रहा हूं क्यों. आई एम आस्किंग यू वाई. आई एम आस्किंग यू वाई बेटा. आई एम आस्किंग यू वाई. Why the total energy is decreasing? Why the excellent. Because when I am moving from 2 to 3, what is happening? I am having sudden expansion. So there will be some sudden expansion, head loss na beta. So this decrease is representing, yes, you are absolutely correct beta. This decrease is representing the sudden expansion, head loss, and this will be equal to what beta? V2 minus V3 whole square, V2 minus V3 whole square by 2z. अब आप बोलोगे अरे सर you have given the formula V1 minus V2 whole square by 2z, then why are you writing V2 minus V3 whole square? There my velocity was changing from V1 to V2. That's why I have written V1 minus V2 whole square by 2z. Here the velocity is changing from V2 to V3. That's why I'm writing V2 minus V3 whole square by 2z. Are you clear till here? Are you clear till here? बोलो रे बाबा, बोलो रे बाबा. Excellent, excellent. Gaurav, very good beta. Gaurav, Raj, Akhil, very good beta. Now 100% here I will be having the parallel line, because what will happen beta? I will be having the head losses. Beautiful, beautiful. Are you able to understand? Any intelligent student of the class beta, any intelligent student of class can tell me. Any intelligent student of the class can tell me beta, what is this beta, what is this distance? मुझे इतना बता दो, I will be very happy. If you are able to tell me what is this distance, I will be very happy beta. मैंने जितना पढ़ाया सब सफल हो जाएगा. Everything will be successful if you are able to tell. If you are able to tell what is this distance, if you are able to tell what is this distance, I will feel very happy beta. Type in chat box, type in chat box, what is this distance? Excellent, beautiful. V3 square by 2z, or you can say V4 square by 2z. Yes, yes, you are absolutely correct. You are absolutely correct. Excellent. Yes, dynamic head at the exit. अब मुझे बताओ, देखो 100% होना चाहिए ना बेटा. Look at here. Look at here. What is the dynamic head at the inlet? What is the dynamic head at the inlet? V1 square by 2z. What is the dynamic head at the outlet? V4 square by 2z. 100% V4 is less than V1 ना. 100% V4 is less than V1. तो याद रखना, please understand my friends, whenever you are drawing this diagram of HGL and TL for sudden expansion, make sure एक बार आंखों से visualize कर लेना. This must be more. This difference must be more than this difference. Of course, at the inlet I am having more kinetic head. At the inlet I am having more velocity head. At the inlet I am having more dynamic head as compared to outlet, because at the inlet cross section area is less. If the cross section area is less, 100% the average velocity will be more, and if the average velocity is more, 100% the dynamic head at the inlet will be more as compared to outlet. That's why inlet पर ये जो gap है, ये जो difference है HGL और TL के बीच में, ये ज्यादा होना चाहिए as compared to outlet pipe. Are you getting what I'm saying? Are you getting what I'm saying? बोलो रे बाबा, बोलो रे बाबा. Are you clear till here? झमाझम concept, झमाझम 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 concept. Are you clear till here? Excellent, excellent, beautiful, beautiful concept. बोलो बेटा, यहां तक आपको क्लियर है क्या? Are you clear till here? Are you clear till here? Then we will be moving forward. Then we will be moving forward. If you will allow me, I will be moving forward बेटा. अगर आप मुझे बोलेंगे सर यहां तक समझ में आ गया, तो मैं आगे मूव करूंगा. If anyone is having any doubt, feel free to ask.
अगर किसी को भी किसी भी तरीके का डाउट है तो एक बार मुझसे पूछ लीजिए, आई विल क्लियर योर डाउट। एक्सीलेंट। और हो गया रे बाबा, ये तो हो गया रे बाबा, ये तो हो गया रे बाबा। मजा 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 मजा, छापा रमेश, मजा 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 मजा, रेड्डी शेखर, मजा 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 मजा। अब आपको समझ में आया? देखो बेटा क्या कलर कॉम्बिनेशन है। यू सी whatever the HGL we have drawn, whatever the HGL we have drawn, that we have drawn with red ink. जो भी TL बनाया वो हमने बनाया ग्रीन कलर से। Whatever the distances we have represented, gaps that we have represented with the black ink. और क्रॉस सेक्शन जो काम की चीज नहीं है वो दिखना भी है नहीं भी दिखना। Are you getting? Whatever the cross sections I have drawn, you should be able to see them, but you should not focus on them. तो आप उन पे फोकस करोगे, then you will not able to focus on HGL and TL. That's why I made with yellow color. Are you getting? Are you getting? अरे क्या बढ़िया डायग्राम है, बेहतरीन। I'm in love with this diagram. I'm in love with this diagram. What a beautiful diagram. What a beautiful diagram. What a beauty. What a beauty. Are you getting it, my friend? Then I will be going for the sudden contraction. अगर आप बोलेंगे सर यहां तक क्लियर हो गया तो मैं what a diagram, what a diagram. Then I will be going. Yes, 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 yes. Yes, Nagin Palli Singh. Very nice, very nice, very nice. चलिए चलिए। अरे बाकी लोग क्यों नहीं आंसर देते रे बाबा? आई वॉन्ट एवरीवन, आई वॉन्ट एवरीवन। हाँ अरे अब आ रहे ना आंसर। यस 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 बेटा, यस 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 छापा रमेश, नो प्रॉब्लम बेटा। नाउ लुक एट हियर। ओ माय गॉड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लास्ट हेडिंग एंड दिस हेडिंग? एनीवन इन द क्लास, एनीवन इन द क्लास कैन टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लास्ट हेडिंग एंड दिस हेडिंग? बोलो रे बाबा, बोलो रे बाबा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लास्ट हेडिंग एंड दिस हेडिंग? एनीवन इन द क्लास? Any intelligent student of the class can tell me what is the difference, what is the difference between last heading and this heading? Anyone in the class? Anyone in the class can tell me what is the difference between last heading and this heading? Bolo re baba, bolo re baba. Here what I'm having, here what I'm having, sudden contraction. Suddenly contract हो रहा है बेटा। Let us suppose I was having one large diameter pipe, and suddenly the large diameter pipe is getting connected to smaller diameter pipe. So 100% I will be having sudden contraction. 100% I will be having sudden contraction. Sudden contraction होने वाला है बेटा, sudden contraction होने वाला है। तो मान के चलिए sudden contraction कुछ ऐसा हो रहा है। Let us suppose the sudden contraction is taking place like this. Let us suppose the sudden contraction is taking place like this. मान लीजिए, for the analysis purpose I am showing you. Let us assume sudden contraction is taking place like this, and now listen carefully. Now listen carefully. Same thing. My approach is same. I don't change my approaches very frequently because I know my students are able to understand approach 1, then approach 2 must be similar to that. I should not change it too much. ये देखिए बेटा, this is second cross section. Let me say this is third cross section. Let me say this is fourth cross section. Now look at here, look at here, look at, wow 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 wow, excellent excellent excellent. चलिए चलिए चलिए, let us try to understand each and everything in proper detail. आप लोग की बहुत डिमांड आ रही थी, सर HGL पढ़ा दो, सर TL पढ़ा दो। ये लो रे बाबा, ये लो रे बाबा, आप बोलो ना आपको क्या पढ़ना है। Everything I will teach you, no problem बेटा। I promised you for fluid mechanics, I will teach you everything. Let me say this is point number 1. Let me say this is point number 2. Let me say this is point number 3. Let me say this is point number 4. Let me say at point 1, pressure is a P1. पीछे जैसा लिख लेते हैं, हाँ, pressure is a P1. Average velocity is V1. I'm not mentioning about potential heads because I have taken on the same streamline now. So 100% potential heads are same because that is the central streamline. So I'm not talking about that. I'm more focusing on pressures and average velocities. P2 V2, P3 V3, P4 V4. अब बेटा ध्यान से सुनना। Any intelligent student of the class, any intelligent student of the class can tell me, can I say P2 will be less than P1? देखो और बताओ बेटा, see it and tell me, can I say P2 will be less than P1? बोलो रे बाबा, बोलो रे बाबा। अरे विवेक, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच। चलिए मुझे सिर्फ एक बात बता दीजिए, कैन आई से P2 विल बी लेस देन P1?
अरे बिल्कुल P2 विल बी लेस देन P1, 100% होगा जनाब, 100% P2 विल बी लेस देन P1. क्यों होगा? बिकॉज ऑफ द हेड लॉस द प्रेशर विल डिक्रीज, देयर विल बी सम प्रेशर ड्रॉप. सो देयर इज नो डाउट, there is no doubt beta, 100% P2 will be less than P1, there is no doubt. And 100% V2 will be equal to V1. Velocity will not change. Are I am having a study, I am having the assumption of steady and incompressible flow. When I am having the study of steady and incompressible flow, if the cross section area is not changing, A1 is equal to A2. If A1 is equal to A2, 100% V1 is equal to V2 or V2 is equal to V1, whatever you want to say you can say. तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है बेटा, P2 will be less than P1 and V2 will be equal to V1. अब यहां सुनना, when the fluid is moving from 2 to 3, मान लो सडन कॉन्ट्रैक्शन हो गया, मान लो सडन कॉन्ट्रैक्शन हो गया. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एक्चुअल केस ऑफ द सडन कॉन्ट्रैक्शन, बट लेट अस सपोज ऐसा कुछ सडन कॉन्ट्रैक्शन हो गया. कैन यू अंडरस्टैंड वन थिंग? 100% देयर विल बी सम लॉस, 100% देयर विल बी सम लॉस. एनी इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास कैन टेल मी about P3. Can I say P3 will be less than P2? P3 will be less than P2. क्यों हो रहा है ऐसा बेटा? क्यों हो रहा है? Because can you observe one thing? V3 will be more than V2 बेटा. Are you able to understand? V3 will be more than V2. अरे बड़े डायमीटर पाइप से अब फ्लूइड चला गया छोटे डायमीटर पाइप में. Now from the bigger diameter pipe, fluid has entered to the smaller diameter pipe, and when fluid has entered to the smaller diameter pipe, its velocity will increase. So 100% this 0.3 I have taken just after the sudden contraction. So there is no doubt V3 will be more than V2. And now the Bernoulli's equation is saying if your velocity is increasing, if your kinetic energy is increasing, yes, of course, as per Bernoulli's equation or as per modified Bernoulli's equation, your pressure should decrease. So P3 is less than P2. Let us see here what will happen beta. 100% if you see here, P4 will be less than P3 because of the head losses, and of course V4 will be equal to V3. ये सब रिलेशंस बताइए मुझे बेटा. Are you able to understand all these things? Are you able to understand all these things? If you are able to understand, I will move forward बेटा. ये जो भी चीजें मैंने लिखी हैं ये सब आपको समझ में आती हैं. ये जो भी चीजें मैंने लिखी हैं ये सब आपको समझ में आती हैं बेटा. Tell me my friends, are you able to understand all these things? Tell me beta, are you able to understand all these things? बोलिए. Yes, crystal clear, very good beta, excellent, very happy, very happy. Now look at here. पहले बनाएंगे HGL. First we will be drawing the HGL. Look at here. Let me say the piezometric head at 1 is this one. So of course when I am moving from 1 to 2, 100% pressure will decrease. There will be some decrease in pressure, of course, because of the head losses. चलिए मान लीजिए ऐसा decrease हो गया. Look at here. Something like this I am getting. Now here you have to understand one thing. Now when I'm moving from 2 to 3, 100% pressure head is decreasing because pressure energy is getting converted into kinetic energy. तो क्या होगा बेटा यहां देखना, there will be a decrease of pressure head from 2 to 3, and that's why you are seeing the hydraulic gradient line is falling. Why the hydraulic gradient line is falling? Here? Because the pressure is decreasing. I'm not, देखो, when I'm drawing HGL, I don't care what is happening to the velocity head. That will be coming in TL. In HGL, I will be seeing only the potential head and pressure head. Potential head is not changing. I have taken on the same horizontal lines. So when I'm seeing the pressure head, as I'm moving from 2 to 3, 100% pressure is decreasing. That's why HGL is falling. Now look at here. Again, I will be getting like this. 3 to 4 because of the head loss. So I hope you are able to understand. Now if I ask you why are we having the fall here we are having the fall. पीछे क्या लिखा था मैंने?
kinetic energy is converting into pressure energy. Here I will write pressure energy is converting into kinetic energy. ये बात क्लियर है बेटा? आर यू क्लियर विद दिस? आर यू क्लियर विद दिस बेटा? आर यू क्लियर विद दिस? दर्शन बहुत इजी है बेटा, बहुत इजी है, बहुत इजी है बेटा। मैं वही बोल रहा हूं, टुकड़ों टुकड़ों में। देखो मैं एक चीज जानता हूं बेटा, क्या मैं एज ए टीचर आपको बताता हूं, अगर कोई अभी मुझे सुन रहा है एंड यू वांट टू बिकम गुड टीचर इन योर फ्यूचर, इन योर लाइफ, आई विल बी टेलिंग यू वन थिंग. आई डोंट नो, आई एम नॉट saying I am good teacher, but the strategy which I am following is, if there is a big conceptual topic, I am dividing that topic into small parts, and then I will be discussing all those small things separately. एक एक करके वो small चीजें आप समझा दो एक बड़े से कॉन्सेप्ट का, तो वो सब लिंक्स बनती हैं, and then those links will make that chain of that complex chain of complex concept. तो आपको वो चैन को डीलिंक करना है और एक एक लिंक को समझाना है, एक एक लिंक को समझाना है बेटा। याद रखना इस चीज को फ्यूचर में। आई नो माई सो मेनी स्टूडेंट्स will become very good teacher of the country. Look at here beta. Now I will be drawing the TEL. Now how the TL will look like? Starting में तो ऐसा होगा. Yes, this is my TL beta. This is my TL. Now what will happen here? I will be having the sudden contraction loss. So थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, and then again I will be having what? I will be having the head losses. So basically this is my TL beta. This is my TL, and of course here you can see I am having this drop, and this is equal to what? Sudden contraction head loss. Sudden contraction head loss. You know how to calculate sudden contraction head loss, right? I have told you. Now any intelligent student of the class, can tell me beta, what will be this? ये कितना होगा बेटा? What will be this? This will be equal to, you can say V1 square by 2z, or you can say V2 square by 2z. Now if I ask you, अगर मैं आपसे पूछूं, if I ask you what will be this beta? Anyone in the class, what will be this distance? तो आपको समझ में आ रहा होगा, दिस मस्ट बी V3 square by 2z, और you can say V4 square by 2z. I hope everyone is clear. यहां पर एक चीज फोकस कर लेना बेटा, एक चीज ऑब्जर्व कर लेना. Are you able to understand? Here the difference or distance between HGL and TL. Look at here my friends, this is your HGL, this is your HGL, this is your TL. Can I say the distance between HGL and TL is small here, and the distance between TL and HGL, मुझे ऐसा बोलने दो, the distance between TL and HGL is less here, the distance between TL and HGL is more here. Why? Because I am having sudden contraction, so average velocity will increase. तो यहां से यार एक चीज देखो, can I give one beautiful conclusion? Look at here beta. In case of sudden expansion, what is happening? HGL is rising and TL is falling. देखो, here HGL is falling, but can you observe here? Here HGL is rising, so it is quite possible in case of sudden expansion HGL can rise. But if you see here, TL is always falling. Now if you see this example, again the same thing, TL is falling, but if you see here, HGL is always falling. So can I give one conclusion? HGL can rise, HGL can fall,
but TEL will always fall. But TEL will always fall until and unless some external energy input is not given. Until and unless some external energy input is not given, अपने आप कभी TL rise नहीं करेगी. अरे क्यों rise करेगी? If TL is rising, the meaning is you are telling that the energy of the fluid is increasing. How can the energy of the fluid can how the energy of the fluid can increase automatically? It cannot increase. It cannot increase automatically. Always the energy of the fluid has to decrease because of the losses. Automatically it will never increase, and that is the reason why in normal situation always the TL will keep on falling. Always the TL will keep on falling because it is representing the losses. Yes, of course, of course, of course you will be having the losses, but you cannot have the generation of energy. That's why in normal case, in general case, your TEL will never rise, except some cases where you are giving the energy from the outside. I will be discussing those cases also, beta. I will be discussing those cases also. Look at here. Let me say, ध्यान से देखना बेटा. Let me say I am having a pipeline. Let me say I am having a pipeline. एक ऐसा केस बताता हूं बेटा जिसमें TL राइज होगा. प्लीज ऑब्जर्व केयरफुली. Let us suppose I am having a pipeline. Let us suppose I am having a pipeline. मान लीजिए मेरे पास एक पाइपलाइन है बेटा. Okay. Let me say in this pipeline somewhere here I installed a pump. I installed a pump. तो अब ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना. I will be taking 4 cross sections. Cross section number 1, cross section number 2, which is just before the pump. Cross section number 3, which is just after the pump. And let me say cross section number 4 is somewhere here. Okay. Now, please observe carefully, my friends. Please observe carefully. Let me say I have taken one horizontal streamline 1 to 2 and then maybe from 3 to 4. Fine. बेटा ध्यान से देख लेना. Here is the point 1. Here is the point 2. Here is the point 3. Here is the point 4. Now you understand one thing, my friends. What is happening? We are giving energy input to the pump from the outside. आपने देखा होगा ना, जब भी आप पंप चलाते हो, जब भी आप पंप ऑन करते हो, you will be giving some power input ना, there will be some work input ना, and that work input, whatever we are giving to the pump will be giving to the fluid. Pump will be giving to the fluid. तो अगर आप देखोगे, if you see the TL, if you see the TL 1 to 2, it will keep on decreasing beta. 1 to 2, it will keep on decreasing. But then since you are having pump in between, pump will be supplying the energy. Pump will be supplying the energy, and then again the total energy will increase. Let me say something like this, and then again because of the head losses it will start decreasing. So I hope you are able to understand what I'm saying. So this is your TL. I hope you are able to understand, my friends. HGL नहीं बनाई है बेटा मैंने, यहां पर HGL नहीं बनाया बेटा मैंने. सर अब तो बढ़ ही जाएगा. यस यस यस. Sir, in case of uniform pipe, TL will be constant. Na TL will be constant means TL will be falling na beta. Inclined it will be falling because there will be some head losses na. Head losses होंगे, उसकी वजह से fall करेगा. HGL नहीं बनाया बेटा पवन, मैंने आप लोग के लिए छोड़ दिया. HGL आप अपने आप बना लेना, है ना. तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया प्रीतम, मैंने बोल दिया ना, मैं एज्यूम कर रहा हूं कि सडनली इंक्रीज कर रही है.
This is the energy head. This is the energy head supplied by pump. ठीक है, यहां तक क्लियर है बेटा? हाँ, यहां तक क्लियर है आप लोगों को? अभी समझ में आ गया बेटा? पवन मैंने ऑलरेडी बता दिया है, ऑलरेडी बता दिया है। टीएल ऑलवेज लाई अबव एचजीएल, ये पूछने की बात ही नहीं है बेटा, मैंने कल ही बता दिया था पवन। टीएल विल बी ऑलवेज अबव एचजीएल बिकॉज टीएल में वेलोसिटी हेड भी ऐड हो रहा है ना बेटा। यस यस यस, बिटवीन 2 and 3 ना। अरे पंप तो 2 और 3 के बीच में ही लगाया ना रे बाबा। तीन तीन के बाद पंप थोड़ी ना है, 3 के बाद पंप थोड़ी ना है। सो वट एवर द इंक्रीज हैज टू टेक प्लेस दैट विल बी टेकिंग प्लेस बिटवीन 2 to 3। तो ये देखो ग्रेजुअली इंक्रीज होता है, बट मैंने सडन दिखा रखा है। ये ग्रेजुअली इंक्रीज होता है 2 से 3 के बीच में, बट फॉर सिंप्लिसिटी आई हैव शोन सडन इंक्रीज इन टीएल, सडन राइज इन टीएल। वैसा नहीं होता एक्चुअल में। ठीक है, क्लियर है सबको? सर बाउंड्री लेयर आपसे ही पढ़ना है, अब वेट नहीं हो रहा, जल्दी शुरू कर दीजिए बेटा। बाउंड्री लेयर आई विल बी टीचिंग फॉर मिनिमम 20 आवर्स, मिनिमम 20 आवर्स आई विल बी टीचिंग बाउंड्री लेयर थ्योरी, उसकी चिंता मत करो। यस यस प्रीतम, यस प्रीतम बेटा, यस सर। आफ्टर देन इट विल अगेन स्टार्ट डिक्रीजिंग। यस यू आर करेक्ट। Mahesh, you can use between 1 and 2, you can use between 3 and 4 modified Bernoulli's equation। सर प्लीज गेट के न्यूमेरिकल्स भी करवा दीजिए। आप आते ही नहीं हो न्यूमेरिकल्स के लिए तो क्या करूं? दैट्स व्हाई आई एम नॉट कीपिंग एनी क्लास। आप लोग का कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, यू पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड। व्हेन आई एम कीपिंग द न्यूमेरिकल क्लास नो वन इज कमिंग, व्हेन आई एम कीपिंग पीवाईक्यू क्लास यू आर नॉट कमिंग। आप लोग आते नहीं हो तो मैंने भी छोड़ दिया। अब मेरे ऊपर कोई जबरदस्ती तो है नहीं, मेरे ऊपर कोई जबरदस्ती तो है नहीं कि मुझे क्लास लेनी है। आई एम टेकिंग द क्लास आउट ऑफ माई ओन इंटरेस्ट। नाउ व्हेन आई एम फीलिंग दैट स्टूडेंट्स आर नॉट दैट मच इंटरेस्टेड आई लेफ्ट। सुपर बाउंड्री, सुपर बाउंड्री, सुपर बाउंड्री। आप लोग आओगे तो करूंगा मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। आप लोग के लिए तो मैंने 10-10 क्लासें ली हैं 2-2 दिन में बेटा। महेश यूज योर ब्रेन, महेश यूज योर ब्रेन बेटा। सर आते हैं ना, कितने आते हैं बिट्टू, कितने आते हैं? अभी देख लो अभी कितने बच्चे लाइव हैं। नहीं वही वही देखो, लेने के लिए तो यू रिमेंबर इनिशियली आई यूज्ड टू टेक 2 क्लासेस एवरी डे, स्पेशल क्लास फॉर न्यूमेरिकल्स। मंडे टू संडे, मंडे टू फ्राइडे आई यूज्ड टू टेक 2 क्लासेस 3 o'clock 4:30 PM। बट धीरे धीरे आप लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो गया तो हम लोग का भी इंटरेस्ट खत्म हो गया। इट इज वेरी लेस ना बेटा गौरव। इट इज वेरी लेस ना बेटा, 90+ तो बहुत कम है बेटा। आप खाली स्टार्ट कीजिए, आप लोग फॉरवर्ड नहीं करते हो ना। देखो द प्रॉब्लम इज यू पीपल आर नॉट फॉरवर्डिंग द इंफॉर्मेशन टू अदर्स। एक बार दूसरों को पता चलेगा तो वो लोग अपने आप ही आते हैं। यू शुड फॉरवर्ड द इंफॉर्मेशन ना बेटा। आप लोग सब लोगों को बोलिए कि क्लासेस चल रही हैं, अच्छी क्लासेस चल रही हैं, आओ करके, है ना। और बताओ कैसी रही अभी तक की आपकी जर्नी? अभी तक आप लोगों ने इतना फ्लूइड मैकेनिक्स, टुडे आई कंप्लीटेड लैमिनार फ्लो, फ्लो थ्रू पाइप, सब खत्म हो गया। आई हैव डिस्कस्ड फ्लूइड एंड इट्स प्रॉपर्टीज, प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट। आई हैव डिस्कस्ड द vortex motion, accelerated vessels. I have discussed the hydrostatic forces. I have discussed buoyancy and flotation. I have discussed fluid kinematics, fluid dynamics, flow through pipes, laminar flow. ओमवीर अपने आप बना लेना, कुछ तो अपने लिए छोड़ दो। ओमवीर अपने आप बना लेना बेटा। बढ़िया 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 सर, योर एवरी कॉन्सेप्ट इज क्रिस्टल क्लियर। संतोष, आई वांट योर कॉन्सेप्ट टू बी क्रिस्टल क्लियर बेटा।
Okay, Rahul. Good. Rahul is saying, sir, please take again. We will forward the links. Very good. Okay, Varun. Okay. Very good. Very good, Bittu. Good. Excellent, ओमवीर. Excellent, बेटा. पढ़ाई करते रहो बस. Ansuman is saying, never studied fluid in this level. Many new concepts. Good evening. Good evening, Ibrahim. Good evening. और कैसे हैं आप लोग? चलिए, आई एम प्लानिंग टू टेक, आपके लेक्चर से एनर्जी आती है. वेरी गुड प्रेम सागर. बढ़िया है, ये तो अच्छी बात है. आई एम प्लानिंग टू टेक दिस बेसिक्स ऑफ कंप्रेसिबल फ्लूइड फ्लो. पता है मुझे न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है. आप लोग आओगे तो करवाऊंगा. राजीव सर सिट्टी, थैंक यू सर फॉर योर एंट्रोपी लेक्चर्स. यस, एंट्रोपी मैंने बहुत बहुत अच्छे लेवल पे पढ़ा है बेटा. प्रखर, जितना पढ़ा रहा हूं बेटा उतना पढ़ लो, काफी आपके लिए. सर, विल वी गेट सक्सेस डूइंग एवरीथिंग ऑल यूट्यूब क्लासेस एंड स्पेशल क्लासेस? हाँ, क्वालिफाई हो जाएगा बेटा बिट्टू. इफ यू आर एमिंग फॉर क्वालिफाइंग द गेट एग्जाम, यू विल बी एबल टू क्वालिफाई बेटा. कोई प्रॉब्लम नहीं है. यूट्यूब और स्पेशल क्लास से आप आराम से क्वालिफाई कर जाओगे. वेरी गुड शंभू, वेरी गुड. आप लोगों ने आप लोग वो लिंक शेयर कीजिए. मैंने एक लिंक दिया था ना बहुत पहले आप लोगों को, नेगी 10 कोड, टाइनी यूआरएल. सब लोगों को फॉरवर्ड कीजिए. वो सब लोगों को फॉरवर्ड कीजिए. टाइनी यूआरएल कोड, tinyurl.com/नेगी 10 कोड. एमएसक्यू से डर है. ओके, लाइक कर दो रे बाबा, लाइक कर दो रे बाबा. थर्मोडायनामिक्स रविंद्रा ऑलरेडी गोइंग ऑन बेटा. थर्मोडायनामिक्स इज ऑलरेडी गोइंग ऑन. इट इज अबाउट टू कंप्लीट. ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पर थर्मोडायनामिक्स हो गया है. ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पर थर्मोडायनामिक्स हो गया है. टाइनी यूआरएल नहीं पता क्या आप लोगों को? नहीं है आपके लोगों के पास? ओके गौरव, ओके गौरव, वही बात है ना. वही वही 6 टाइम गेट क्वालिफाइड, वही बात है बेटा. एक बार फाइनल प्रिपेयर कर लो अच्छे से. यही प्रॉब्लम है. अभी देखो कितने लोग यहाँ पर हैं, सब लोग क्वालिफाई करेंगे, कोई रैंक लेने वाला नहीं है. जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी रैंक नहीं आएगी बेटा. ये चीज याद रखना. जैसे गौरव ने 6 बार क्वालिफाई किया है, वैसे ही क्वालिफाई करोगे. रैंक लानी है तो आ जाओ अनअकैडमी प्लस पर. डीपीपी सॉल्व करेंगे. क्विज लिखेंगे. और अगर सिर्फ क्वालिफाई करना है तो रहो यूट्यूब और स्पेशल क्लास के भरोसे. स्ट्रीमलाइन कर लो बेटा अपनी प्रिपरेशन. बेटा गौरव, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो. जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे अच्छे से 3000 से नीचे नहीं आएगी रैंक बेटा. अगर लानी है अंडर 500, एक बैच चल रहा है अनअकैडमी प्लस पर, टारगेट बैच, उसको ज्वाइन कर लो. और इफ यू हैव टेकन द कोचिंग अर्लियर फ्रॉम समवेयर, आप आरआईबी ज्वाइन कर लो, रैंक इंप्रूवमेंट बैच. ऑलरेडी मैं बोल चुका हूं, देयर इज अ रैंक इंप्रूवमेंट बैच गोइंग ऑन अनअकैडमी प्लस. आप उसे ज्वाइन कर लो, वहां पर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवा रहे हैं. आपको प्रैक्टिस का रिक्वायरमेंट है बेटा गौरव. 3000, आप अगर 6 बार आपने गेट लिखा है, क्वालिफाई किया और 3000 पे आके अटके हो, मतलब कहीं ना कहीं अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं है.